होने के बाद हम रन अप करके दिखाएंगे। On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Relax, enjoy. Anurag here. So this day 6 and this is the last workout of the day and तुम Sunday going to be the rest day. So guys, हम यहाँ पे कार्डियो करेंगे. So जैसा कि PDF में मेंशन है, डाउनलोड करके आप देख लो. वहाँ पे 20 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल और 20 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं. ट्रेडमिल आपके पास है तो बहुत अच्छा, बस साइकिलिंग हर किसी के जिम में अवेलेबल होते ही होता है, तो आउटडोर साइकिलिंग करें, दैट्स अपॉन योर चॉइस. सो कार्डियो का मतलब ये नहीं होता है ट्रेडमिल एंड साइकिलिंग, बहुत सारे चीज़ होते हैं कार्डियो, वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा. सो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा. सबसे पहले आपको 5 मिनट्स वॉक करना है, देन जो बचे हुए टाइम है अराउंड उसको फिर रनिंग करना है, देन जो आफ्टर रनिंग 5 मिनट्स आपको स्लो डाउन करना है. स्लो डाउन इन द सेंस वॉक करना है. तो पहले हम 5 मिनट वॉक करेंगे. सो आपको दिखाते हैं 5 मिनट स्लो वॉक. ओके, सो आई विल स्टार्ट माई ट्रेडमिल. सो यहाँ से जस्ट 5 पे रखे. 5 इज द गुड अमाउंट ऑफ स्पीड फॉर द ट्रेडमिल. 4 to 5 उससे ज़्यादा आप ना रखें. एंड 4 to 5 होने के बाद आफ्टर 5 मिनट ऑफ ट्रेनिंग, आई मीन 5 मिनट ऑफ कार्डियो, यू हैव टू डू नेक्स्ट थिंग. सो नेक्स्ट विल बी रन अप. सो 5 मिनट होने के बाद हम रन अप करके दिखाएंगे. सो गाइस, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि कार्डियो उतना लंबा बहुत हो जाएगा अगर वीडियो में शूट करूँ तो. सो आई शो यू द रनिंग. ओके, so just run. Run for around 10 minutes. 5 minute full walk and 5 minutes slow down. Okay. So after running, what you have to do? Just slow down and just walk for 5 minutes. So यही करना आपको 20 मिनट तक, ये आपकी कार्डियो हो जाएगा. एंड उसके बाद हम एब्स स्टार्ट करेंगे. सो मेक श्योर टू स्टार्ट कार्डियो फर्स्ट. ओके गाइस, so we have finished our cardio session. So cardio was so intense enough, as you can see on my face, it's too much sweaty as I am right now feeling. You will also too feel. And what is cardio we use for? Cardio is that thing which exercise your heart and lungs. बहुत लोग कार्डियो को स्किप करते हैं because they don't want to train. They only do weight lifting. So include cardio in your workout. This also reduce the water hold in your body too, means excess water. Okay. Now I am here to introduce you the abs workout. Abs is equal to abdominal. Abs and short form of abdominal is abs. So in abs there are types of, or you can say groups of muscle. Today I am here to explain you. So the thing when bodybuilder pose the front legs spread. The thing you see here, it's like reverse direction. It's called serratus muscle. Serratus बहुत खूबसूरत दिखाती है जब आप फ्रंट लेग्स स्प्रेड करते हैं. फोटो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बॉडी बिल्डर्स में दिखा रहा हूँ. अगेन सेरेटस के बाद आता है हमारा ऑब्लिक्स मसल. तो ऑब्लिक्स यहाँ से स्टार्टिंग होती है और ऑब्लिक्स का जो होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, कुछ इस तरह से रहती है. एज यू कैन सी इमेज अराइविंग ऑन द स्क्रीन टू. एंड
उसके बाद होता है हमारा लोअर एब्डोमिनल एंड अपर एब्डोमिनल, और जो लाइन जो इसको सेपरेशन देती है उसको बोलते हैं लीनिया आल्बा। तो इतनी ही होती है हमारी एब्स की मसल, और उसके बीनीथ इनसाइड बहुत सारे होते हैं मसल्स, हम उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज मेनी ऑफ देम आर बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स, एंड दिस पीपल, सम पीपल डू नॉट नो इवन द नेम, सो दिस मच ओनली यू इज नेसेसरी टू नो, एंड वी विल हियर टू टीच यू how to do workout of each and every muscle group and we are targeting all the muscle. So यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ी एडवांस लेंगे. So if you are beginner, do not use weight, and if you are intermediate or advanced, you can use the weight. So सबसे पहला एक्सरसाइज होगा हमारा सुपर सेट. अगेन सुपर सेट इज बैक टू बैक 2 एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारी 2 एक्सरसाइज होगी. यू नीड अ इंक्लाइन बेंच, वहाँ पे हम इंक्लाइन करंट चेस्ट परफॉर्म करेंगे और डिक्लाइन करंट चेस्ट विथ वेट. एंड इफ यू आर बिगिनर डू नॉट यूज द वेट. एंड यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होगा रेंज ऑफ मोशन. तो बहुत लोग अपनी जो लंबर है उसको फ्लैक्स करते हैं, जिसको फ्लैक्स नहीं करना, वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट आवर एब्डोमिनल मसल. तो वहाँ पे हम दिखाएंगे. एंड सबसे बड़ा गाइस इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ है ब्रीदिंग. विदाउट ब्रीदिंग यू कैनॉट स्क्वीज योर एब्स प्रॉपरली. So to squeeze your abs properly, you have to just inhale and exhale. When you contract your muscle, exhale, and when you release your muscle, inhale. So that's the pro tip. And I am using amount. You can use the least amount of weight which you can contract your muscle easily. Okay. I am taking 10 kg of plates. You need kind of this bench. This is called incline bench. I am putting its angle on full incline. So as you can see, my angle is on full incline, and this setup to be full decline. Okay, so that's the posture. So how to do incline one and the decline one? Okay, so in this you have to see the first posture of the bench and then your posture. तो सबसे पहले हम इंक्लाइन लगाएंगे. The thing you have to do is just sit, okay, and hold the weight plate. And guys, if you are thinking that I am lifting it wrong, then you are right. The weight I lift from that position is wrong. I will tell you the correct position how to do. And do not lift in this position, otherwise you can injure your wrist too. Okay, so what you have to do, inhale first, then release your breathing. Okay, and this much you have to come and then contract. So after this you have to perform 10 to 12 repetitions. And in this exercise it's optional that you can perform death rep, and if you want to perform then it's good one, because it's too hard to perform the death rep in this abdominal muscle. And again what you have to do for decline in this bench only, you can hold dumbbell if you are expert in lifting the weights. I'm not getting the. So just hold, and just what you have to do, grab your things one. So guys, due to I am holding the mic, I cannot able to lift up all of the leg towards up. So what you have to do is you have to, this knee you have to touch to your this lower chest. Okay, that's the correct posture. Because of the mic I am putting here, I cannot able to do full range of motion, but I will show you in my cinematic how to do this full range of motion. So this is our first rep. You can either to perform death rep, and as I have shown in my video, in previous video, how to perform the death rep, you can either use in this. Okay, so guys, we had finished our first superset. We have 3 supersets, so we are currently now in second superset. So you have to perform
2 to 3 repetition of 10 to 12 repetition, and death rep is optional in abs workout only. You can perform death rep in abs workout if you want to train it very intense and micro tier. Okay, again guys, I want to tell you one thing, that if you are training hard or you want to train like an advanced, then use the death rep in this only abdominal. Okay, and we are going to use the one hand oblique crunch, which will hit your oblique area, and we have to do rope crunches for the upper abs too. Okay, let's come. I will show you how to do. You need kind this. So what is this? Cable machine. Okay, so cable machine, and I am bringing the handle. I will show you which handle you have to use. You will need kind two handles. One is this handle, and this handle is for oblique crunch, and another one is this for rope crunch. Name is rope crunch. Either you can use rope, or you can use this cable, but that's your choice, man, what you want to hold, because rope or cable, that's enough. So what you have to do is just fix this and this, and choose the weight which you can do correctly in this. अब ज़्यादा ऊपर इसको ना रखे, अराउंड अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर ले, जिससे कि आप पूरे अपने ऑब्लिक्स को क्रंच कर ले. एंड द पोस्चर विल बी, यू हैव टू फेस towards which direction I am facing. Okay, straight forward neck, and in this you have to just do this, hold the cable and just this, crunch your oblique. Do not move any other muscle, or do not take the tension on other muscle. Just the thing is, you have to just pose when bodybuilder pose like a bicep one. You have to hold like this, I am straight, and just turn it little bit, and you have to do crunch. That's the posture I am showing you. You have to just kneel down, and you can see this posture. Near my lower legs, the oblique muscle, all the oblique muscle near serratus, I am training. Okay, so 1, सो गाइस, ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड परफॉर्म करना है. एंड अगेन आफ्टर दिस परफॉर्मेंस यू हैव टू परफॉर्म 2 to 3 sets of heavy 10 to 12 repetition. Again back to back without any rest. Put this handle, or you can use the rope, your choice. I am using this. Put the maximum weight which you can crunch nicely your upper abs. And just the thing is, here one thing people will make mistake, that they will engage their lumbar area, means lower back. तो यहाँ पे आप देखिए, जब मैं नी डाउन करके इस पोस्चर को आप देखिएगा, जब मैं नीचे करता हूँ, so I will contract my upper abs. This is the range of motion, but I will not do this position. Only I will crunch and this much, crunch and this much, like that you do sit-ups in your bench. That's the only form. So इसको भी आपने 10 to 12 repetition, 2 to 3 heavy sets, and that's enough. इसके बाद इसी में मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा नेक्स्ट सुपर सेट है, उसको आपने कैसे परफॉर्म करना है. यू नीड दिस अपर एंड लोअर ऑब्लिक क्रंच. सो द एंगल विल बी वेरी हाई. दिस इज क्रंच. दिस इज कॉल्ड रोटेशन क्रंच टू, बट आई लिस्टेड अपर एंड लोअर बॉडी क्रंच. द थिंग, like we do the cricket shot or the helicopter shot this way. So you have to move your torso. Okay, you have to move your torso. Do not move your butt and thighs. Okay, you have to just move your torso.
1 2 3। यहाँ पे गाइस आके 1 सेकेंड का होल्ड ले ताकि आप अपनी ऑब्लिक को फील कर सके और अपर में इस पोजीशन में आप स्ट्रेच करें अपने ऑब्लिक को। एंड मेक श्योर व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रीथ आउट, एंड व्हेन यू आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल मीन्स रिलीजिंग, यू हैव टू ब्रीथ इन। ओके, तो ऐसे ही आपने दोनों साइड परफॉर्म करना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के ऑब्लिक। अगेन इसके बाद जो हमारा होगा प्लैंक फोल्ड। तो प्लैंक फोल्ड आपको कैसे करना है, जस्ट द सिंपल थिंग 1 मिनट होल्ड। तो आपको 3 सेट्स ऑफ 1 मिनट to 2 मिनट होल्ड। जस्ट थिंग इज you have to grab this hand like this and just straight your position and hold for up to 1 minute. Just repeat it for 3 times for 1 to 2 minutes, and that will your finisher of your abs workout. This much is for today guys. Thank you, see ya. And if you are watching our channel, make sure to do like, share, subscribe. Instagram link is on description. Go and follow there for further updates of my video upcoming in YouTube. And if you many of the viewers are watching our video but not subscribing, please do subscribe.